22 मार्च सुबह के 11:45 बज रहे हैं। करीब 20 मिनट पहले आई स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम Zostel Rajgundha and I'm going to Chana Pass. So I'll talk a little about this place. So Zostel Rajgundha is in the Barod district. So to get here you need to take a bus from Beer or Mandi till Badagram. फिर Badagram से I think I'll show you Badagram after a while. So Badagram is like the last bus stop. फिर वहाँ से करीब 5 किलोमीटर की हाइक है and it's just a plain road. ऐसे it's not very difficult to walk on. So 5 किलोमीटर चलने के बाद Zostel आती है. But the thing is, this 5 kilometer stretch is like a U bend. So on बीच में uhul नदी बहती है. So you could cut across and reach Zostel Rajgundha, but it's like a steep descent and a steep ascent. So it's difficult, and more so with a backpack. So I met this villager yesterday, Sanjeevna. She also happened to be going to Rajgundha from Vadagram bus stop. By the way, I'm walking on snow. Yeah. So she told me कि आपको Zostel Rajgundha जाना है तो आपको शॉर्टकट से ले चलती हूँ. अगर चढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है तो आओ मेरे साथ. And I was like, sure. If this woman can make it, who has like 3 bags, like one on her bag and back and one हाथ में and दूसरा कंधे पे, and she has only slippers. So I thought मैं तो कर ही लूँगा. So I just started following her, and it was a crazy difficult hike. So going down was easy, but coming back up it was a very steep ascent. Anyhow, I managed and reached Rajgundha. Yeah, so that's how you can reach Rajgundha, Zostel. And once you reach here, you'll feel like this is worth all the effort. This, guys, is the beautiful Barot Valley. The road so far has been pretty easy, as in no climbs or descents. Also the quality of the road is pretty smooth, except कहीं बीच में there's snow on the road, and it can be a little tricky because you don't want to slip, because otherwise you go down rolling into the valley. Yeah, so as you can see, plenty of people have used this road before me. Apparently this just opened up like a few weeks back. The entire valley opened up a few weeks back. Like the villagers are just coming back. Yesterday the villagers I met, Sanjeevna and her husband, वो भी ऐसे नीचे कहीं बीर के पास रहते थे for December, January, February, जब यहाँ पे snow बहुत ज़्यादा हो जाती है and it's not possible to live here. So people are coming back. Zostel also just opened. यहाँ पे भी like अभी ज़्यादा tourists है नहीं. In fact जब मैं कल आया so बस एक बंदा ही है वहाँ पे. So he's from Delhi. Like he was working somewhere and his role apparently got dissolved. So he thought यार चलो यार कोई दूसरा जॉब करने से पहले थोड़ा घूम आए.
So I want to talk about a few important things to keep in mind agar you want to come on this hike or any hike or trek in these parts for that matter. So अभी March चल रहा है and it's really hot here. Like धूप बहुत ज़्यादा हो रही है दिन में, तो बहुत गर्मी लग रही है. मैं लाहौल गया था अटल टनल क्रॉस करके. It's like completely covered in snow and you'd feel कि तुम्हें you need a lot of layers and ठंड बहुत ज़्यादा होगी. लेकिन दिन के टाइम में इतनी धूप थी कि अपनी जैकेट, अपनी फ्लीस, सब कुछ खोलना पड़ रहा था. लाइक टी शर्ट में घूमना पड़ रहा था. सो इन स्पाइट ऑफ दैट यू वुड फील कि चलो इतनी गर्मी है, लेट्स जस्ट गो ऑन आवर टी शर्ट. सो द प्रॉब्लम विद दैट इज when you're hiking, when you're doing something like some intense physical workout, something strenuous, so you'll sweat. So when you cool down, your body temperature will fall very fast. So you don't want that to happen. So it's important to be covered. Jaise right now I'm wearing a fleece and मैंने अपनी टोपी पहनी है. So I'm pretty warm. Also a little sweaty inside, but I think this is better than catching a cold. Also, rest of the gear, this is a very simple moderate hike, so you don't need much. Like I'm wearing waterproof shoes from Quechua, so these are coming in handy while walking on snow. And पता नहीं मेरे शूज़ दिखे भी नहीं क्योंकि इतनी धूप है, मुझे स्क्रीन तो दिख नहीं रही है, so I'm not sure दिखे कि नहीं. And also wearing track pants जो ज़्यादा मोटे हैं नहीं and quick dry हैं, so which is nice. Also I'm carrying like water, so 1 लीटर का बॉटल लिया है. And I've been told कि यहाँ जितने भी स्ट्रीम्स मिलेंगे सबका पानी पीने लायक है, so that shouldn't be an issue. Also packed lunch क्योंकि it might take me a while before I get back to my Zostel and रास्ते में कुछ खाने को मिलने वाला है नहीं. Yeah, that's pretty much it. What else? Right, so यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है and this atmosphere is very like it's rarefied, so it's easy to get sunburn. So I have like मैंने तो अच्छे से पोत लिया है, sunscreen and full sleeves पहने. So that would be one good precaution to take if you don't want to get sunburn. And हाँ, चश्मे. So as I wear glasses, लेकिन उनके ऊपर मैंने ये oversize चश्मे पहने हैं, like क्योंकि it's very bright. These are from Quechua and these do a very very good job. Like काफ़ी ज़्यादा brightness कम कर देती है. And जहाँ पे snow हो वहाँ पे तो ख़ास कर बहुत काम आती है क्योंकि snow reflects a lot of light and really hurts your eyes. So yeah, that's pretty much it about what you'll need, what you should take. So जैसा आपने देखा अभी I just came back क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा स्नो थी. So in case I fell, I didn't want to be without my phone. Like at least I would be able to call for rescue. So I'll try it again. अगर आगे जा सकता हूँ तो I'll show you what's ahead. Otherwise I'll have to head back. Yeah, so now is the tricky part. Like आगे looks like it's gonna be difficult to go ahead. Like the snow is too steep.
मैं यही देख के लौट आया. I'm really not sure if I should go on, but I see a foot trail though. I think I'll go ahead. Chalo guys. I'll take this one. I just hope I don't trigger a mini avalanche and all of this snow goes down. Chalo bhaiya, let's go. Yeah. Chalo, crossed it. And I fell. Wow bhaiya. Made it. Yeah, so I made it across safely, across that snow sort of slope, but पीछे एक और है, and this one really seems tricky. And last वाले में तो I did slip and fall, but thankfully didn't go anywhere, just fell in place. This one seems tricky and आगे रास्ता भी बंद लग रहा है. So should I go? I don't know if you can see that part. It's like a 45-degree slope, and the snow, I'm not sure if it's very loose, if it will fall. क्या किया जाए? तब तक नज़ारा देखते हैं थोड़ा. Let me catch my breath. Yeah, so I made it across. कुछ ऐसा eventful तो था नहीं. And also I wanted to use both my hands, so मैंने didn't take my phone. यहीं पे GoPro काम आता नहीं. चलो कोई ना. I did cross it and didn't slip. लेकिन आगे there's, I think, has been a landslide, so ये रास्ता बंद सा लग रहा है. But I think side से I can go ahead, so I'll try to do that. मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ, so definitely would seem very amateurish, and I also can't pronounce stuff properly. I said amateurish या कुछ. Low oxygen, दिमाग नहीं काम कर रहा. So right now I'm in a shady place, and like shady, छाँव वाली shady. And give you some perspective. So वो वहाँ जो छोटी सी गांव दिख रही है उधर एक, and that's the Balagram bus stop. So from there, this far I've made it on foot. And like राजगुंधा तक कल शाम तक गया था, रात सुबह राजगुंधा से आगे. And वो पीछे जो दिख रही है वो I think is the Dhauladhar range. Majestic, isn't it? Let's go ahead.
So काफ़ी गर्मी एंड इट्स ईजी टू गेट डिहाइड्रेटेड. सो काफ़ी ज़रूरी है कि हर थोड़ी देर पे हम पानी पीते रहें. कितनी शांति है यहाँ. The last time I felt so peaceful was, I think, in Gurdungmar, Sikkim. I don't know if you can listen. नीचे ऊल नदी की आवाज़ आ रही है. I think I'll sit here for a while. I feel a little breathless. So it's easy to get excited and feel like ये तो आसान रास्ता है. I'll cover it quickly. So the problem is, for those who are not used to living in these parts, the lack of oxygen in the air can be an issue. So last night, जब मैं सो रहा था, I woke up many times, feeling as if I have not been able to breathe for a while, feeling like I've been suffocating. So I read that it's common, it happens to people. In fact, जो मेरा roommate है Zostel में, like he's been here for a couple of nights now, and both nights he couldn't sleep properly because he was very breathless. In fact, वो तो oximeter लेके आया, and he's been checking his oxygen levels. It's around 90, 91, and then comes back to 95, 96. It's fluctuating. So yeah, it's important to not exert yourself too much. Take it easy. It's important to get back, right? And if you're doing it alone, you need to look after yourself. So yeah, now I'm facing this snowy stretch again. Wish me luck. So it just snow hai. I think it last snowed in February. This is the residual snow. It's pretty tough. It's not difficult to walk on. ऐसा नहीं है कि पैर रखते ही I fall into some crevice or something. So yeah, the trickiest part till now. Oh my god, just ये देखो. Yeah, don't want to slip. इन पार्ट्स में लैंडस्लाइड का खतरा तो बना रहता है. जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे रॉक्स कुछ वक्त पहले गिरे हैं शायद यहाँ. So it's important to be careful and very alert. One piece of equipment would have been very useful here. Trekking poles. मुझे अपनी उंगलियां यूज़ करनी पड़ रही हैं trekking poles, and काफ़ी नम हो गए. I think I'm close to the end point. चलो, भूख तो लग रही है, लेकिन I'll go and have my lunch there.
So I'm not very good at this, but ये पंजों के निशान पता नहीं किस जानवर के हैं. Looks large यार. Can't be a dog. इतना बड़ा डॉग होता है क्या? This is my hand for reference. Now I'm a little scared. And काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं ये. Should I head back? Zostel वाले तो कह रहे थे कि काफ़ी सिंपल है, सेफ है. But then in these parts, what do you know? I'm not gonna lie, I'm a little scared right now. But I think the end is very near and I don't want to regret not going. So चलते हैं. बर्फ पहाड़ों पे तो बहुत खूबसूरत लगती है और कभी कभी थोड़ा खेलने में भी अच्छा लगता है अगर आपके पास हो. लेकिन अगर रास्ते पे बार बार मिले और इस तरह से, तब तो यार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. So I've come so far. Relatively easy, but what's important is to find a stick or a trekking pole if you have one, क्योंकि ये बहुत हेल्प कर रहा है. I have found two, so इनको यूज़ करके काफ़ी एक तो सपोर्ट मिल रहा है एंड कहीं पैर रखने से पहले यू कैन एक्चुअली चेक कि वहाँ की स्नो कैसी है, भुरभुरी है या सख्त है. सो आई थिंक हो तो जाना चाहिए कवर. आगे तो लंबा रास्ता बचा है. So I did cross the snowy patch safely. These were lifesavers. Can't tell you how important it is to find sticks or a pole before you attempt something like that. It made it very easy. It was like walking on four limbs. I'll catch my breath. I'll rest for a while. If you feel like giving up, if you feel demotivated, lonely, scared, just look at the mountains. They'll always cheer you on. Such a good motivation. It's important to not give up because you really feel good afterwards about yourself, like I do right now. Chalo, let's go. See you. It's 12:30. I started around 10:30 in the morning. I've reached this point. Hell race. Looks abandoned. So the thing is, अभी तो कोई यहाँ I think लौटा नहीं है. April I guess सब लोग आना शुरू करेंगे. So looks abandoned. Yeah, this is the point of the map also which I saw. यहाँ पे there's a U-bend. If you see on the map, my brain is not working properly. I forgot the name of the place. क्या जगह का नाम था? Rajgundha. Yeah. So Rajgundha से यहाँ तक का रास्ता सीधा है. यहाँ से U bend है. And I think वो रास्ता ही है. वहाँ पे पहाड़ों से जा रहा है.
आगे जाके थोड़ी दूर जाके ख़त्म हो जाता है. So yeah, I'm almost at the end, and I think at the end I'll find Chana Pass. वहाँ दूर में मुझे नीचे वहाँ पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वहाँ कुछ घर तो दिख रहे हैं. So I'll try to get there, and I to be economical with my battery also. It's dying out pretty quickly, and my power bank stopped working. It's so beautiful. Another landslide. So मैं what was this place, Hell Ride या ऐसा कुछ, वहाँ से बस थोड़ी दूरी चला मैं, and आगे there's this road block. I think there's been a landslide or something. Not sure if I should attempt to cross it. Looks थोड़ा loose तो लग रहा है, but hey, look at the view. So I think down there I think it's बीर या बिलिंग. मैं थोड़ी देर 2 दिन पहले तो वहीं था बीर में, staying at Camp Connect. So Camp Connect, it's run by 2 amazing people, I think 3, Ayush, Mrinal and Rahila. So Mrinal ने suggest किया आप Zostel Rajgundha जाओ if you're looking for such places, little secluded, beautiful. Thanks Mrinal if you're watching this, great suggestion. So down there I think is the landing site. I could be completely wrong. मेरा यहाँ मैप तो चल नहीं रहा है. I've lost connectivity. So that could be Birya Billing landing site, or could be a little far away from here. Chalo. You know what? I'll attempt to cross this. But I won't be careless. अगर ज़्यादा रिस्की लगे तो I'll head back. नहीं यार, maybe another day. ये तो ठीक नहीं लग रहा आगे. ऐसे भी it's around 1 now. I took around 2.5 hours to get here. I should also head back, find a nice shady place, shady छाँव वाली जगह, and have my lunch. So that's it. समय हो रहा है 12:50. I started around 10:30 from Rajgundha, or now I'm gonna head back. I finished my lunch. आगे जा नहीं सकते क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं उस रास्ते गया था आगे और रास्ता ब्लॉक था because of a landslide I guess, and I didn't want to risk it because थोड़ा फिसलने का चांस ज़्यादा लग रहा था. So head back. So doing this is very simple. You come to Zostel Rajgundha,
वहाँ से बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि भैया आप चेना पास चले जाओ, बस ऊपर जो रास्ता है उसको बस फॉलो करते रहो, जहाँ दूर तक जाता है, जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाओ, एंड कहीं जाके ख़त्म हो जाता है। सो अफसोस आई कुडंट फाइंड आउट कहाँ जाके ख़त्म होता है। कोई ना, मे बी सम अदर टाइम। सो आई हेड बैक। हेल रेस के पास एक मंदिर भी है। मैंने जूते पहने तो मैं और अंदर तो नहीं जाऊंगा, और मुझे समझ नहीं आ रहा ये मंदिर किसका है, बट इट इज़ इन अ वेरी पीसफुल प्लेस। भगवान की तलाश में निकले हो तो यहाँ आना कभी, शायद मिल जाए। यहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ, आगे व्यू बहुत ही सुंदर है। सो I'll sit here for a while and then head back. I don't know what these flowers are. काफी सुंदर है। वहाँ भी उस पेड़ पे लगे हैं। इन चीज़ों में तो मैं बहुत जाहिल हूँ। फ्लावर्स, लीव्स, ट्रीज, इनफैक्ट पॉ प्रिंट्स। वहाँ दूर में आई थिंक आई सी वही धौलाधुर्ग रेंज का कोई पीक है। Isn't this beautiful? So I met this man right now. कितने आसानी से ये बर्फ़ पे जा रहे हैं। तो ये बिलिंग जा रहे हैं। इनको मैंने बताया कि आगे थोड़ा शायद गिरा हुआ है रास्ते में, रॉक्स वगैरह रिस्की है, तो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटे में मैं तो पहुंच जाऊंगा बिलिंग। सो बिलिंग से मैं बस से बड़ा ग्राम तक आया था, एंड इट टुक अराउंड सुबह 11:30 से बस चली थी और मैं करीब 4:30 बजे पहुंचा था। तो ये रास्ता जो है ये मोटरेबल तो है नहीं, तो इस पर थी ऐसे ही बिलिंग तक कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। ये कह तो रहते साथ चलो दिखा देता हूँ, लेकिन कहते वापस आने में बहुत देर हो जाएगी, शाम हो जाएगी, और शाम को अकेले ठीक नहीं रहता, तो ज़्यादा डेयरडेविल नहीं बनता हूँ मैं, और वापस ही चल पड़ता हूँ। चलो आगे के रास्ते। ये आई थिंक ये देवदार के पेड़ हैं, या फिर इज दिस पाइन, डोंट नो। एंड ये कुछ तो गिर रहा है इनसे, मे बी इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज दिस, व्हाट इज दिस? ये पाइन के क्या फ्रूट है या सीड? आई एम सो इलिटरेट यार, नो आइडिया। Yeah, this place is cluttered with these, whatever these are. I made a very foolish decision. मुझे लगा था कि सारे स्नो वाले स्लोप्स ख़त्म हो चुके हैं, सो आई थ्रू अवे द स्टिक्स आई फाउंड, और अभी मुझे कोई अच्छे स्टिक्स मिल नहीं रहा है। सो आई एम थिंकिंग कि ये रास्ता तो फिर वहाँ तक जा रहा है, सो व्हाई डोंट आई नो ऐसे वैली से ही चले जाता हूँ, कट अक्रॉस and reach there. Might turn out to be a wrong decision.
looks pretty safe. Like यहाँ से तो जा ही सकते हैं. So मैं वहाँ ऊपर से नीचे तो आ गया. मगर this looks pretty steep. And I think and ये सारे rocks भी काफ़ी slippery हैं. So I think I'll इस रास्ते से ऊपर चले जाता हूँ. That would be the only thing possible from here. नीचे तो काफ़ी steep लग रहा है. Climbing down could be tricky. I'll see you back on top. Yeah, so I bypassed that snowy part. Maybe I'll get back on the main road. Cool. I think that's a school. वहाँ बच्चे खेल रहे हैं. It's games period for them. यार इंसान कितना जुझारू है. इतनी मुश्किल हालातों में भी रहना सीख जाता है. यहाँ दूर दूर तक तो कुछ है नहीं. बस एक ये गांव है और आगे राजकुंदा है. I found this hill stream and I'm very thirsty. अब मेरा पानी तो ख़त्म हो गया है. I think पीने लायक तो है ये. So let's fill it up. Tastes good. Mountain spring water. So let's go. समय हो रहा है 2:45. And I've reached back to where I started from, Zostel Rajgundha. I started around 10:30 a.m. and I'm back in around 4 hours. I did it very leisurely. If you want, you can definitely complete it within 3 hours. It was a great experience. So yeah, that's it from my side. This is Ankit signing off. I'll leave you with pictures of the beautiful Barot Valley.